मिथिला से संबंध बहुत दिनों से छूटा हुआ है, तो थोड़ा बहुत मैथिली भी बोल लेता हूँ। महाराष्ट्र में रहा हूँ तो थोड़ी बहुत मराठी के भी एक आध शब्द बाइलिंगुअल ही अच्छा रहेगा सर। ठीक है। तो अभी सर आपके ये लगता है वीडियो पहले वाला चल रहा है, उसके ऑडियो उसको कट कर देता हूँ। चलिए अब शुरू कर दें। जी जी, 1 मिनट सर। मैं अपने पार्टिसिपेंट से ये निवेदन करता हूं कि अपने माइक्रोफोन को ये म्यूट पे रखें और फिर हम लोग इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में आज के दूसरे सत्र में लंच के पश्चात आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, आज की परिस्थिति में अभी हम लोगों के सम्मुख। विनोद जी अपने माइक्रोफोन को जरा म्यूट कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत अभी होने जा रही है और इसके लिए हमारे आज के ऑनरेबल स्पीकर प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद साहब, जो मैंने कल आप लोगों को बताया है कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में जो कुछ नए सेंटर्स खुले हैं, जिसमें एक सेंटर है स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, उसके आप सम्मानित निदेशक हैं। और एक बड़ा अच्छा मेरे लिए वाकया हुआ कि मैं 2-3 महीने पहले दिल्ली, वो जो CEC का सेंटर है, वहां पे श्री JP नड्डा साहब से मिलने के लिए मैं गया हुआ था, इस HRDC के संदर्भ में ही बातचीत करने। और ये सर मेरे लिए सचमुच सौभाग्य की बात थी कि उस दिन दफ्तर में आप भी उपस्थित थे और पहली बार आपसे मुलाकात मेरी वहीं हुई। मैंने आपके फोन नंबर नोट्स किए, आपके कॉन्टैक्ट्स नोट किए और आज उसका लाभ सीधी तौर पे हम सभी को यहाँ प्राप्त होने वाला है। तो पार्टिसिपेंट्स के लिए एक सूचना के तौर पे कि सर जो यहाँ स्कूल ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में जो चीजें, पाठ्यक्रम और शोध इत्यादि तो चल ही रही है, लेकिन सर का ऑडियो विजुअल मीडियम में काफी लंबा एक अनुभव रहा है, न केवल प्रशासनिक तौर पे बल्कि एक स्टूडेंट के तौर पे भी। सर ने मुझे बताया कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो पुणे में है, FTII, वहां से भी आपने तौर तरीकों को और बाकी जो ट्रेनिंग आपने ली है, वहां भी आपका मार्गदर्शन लोगों को मिलता रहा है। और दूरदर्शन में काफी लंबे समय से, मुझे आप वेबसाइट से ही सर मैं देख रहा था कि 1982 से जब से दूरदर्शन और उसके शैक्षणिक चैनल पठन पाठन को भी काफी गंभीरता से हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। और शायद उसी का परिणाम है कि आज हम फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के इस 28 डेज के सेशन को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, मैं कह सकता हूं कि ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई जैसे शहरों से भी हमारे रिसोर्स पर्सन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और काफी अच्छी प्रस्तुति हो रही है। तो कल शाम प्रतिभागीगण, आपको मैं बताऊं कि सर से जो मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने जो आज का विषय सिलेक्ट किया, दैट विल बी इनहैंसिंग डिजिटल एजुकेशन। और अभी की जो मांग है, अगर ये मैं सही टॉपिक बता पा रहा हूं, अन्यथा आप उसे और डिटेल्ड इलैबोरेट कर देंगे। तो इन्हीं बातों के साथ हम सभी लाभान्वित होने वाले हैं आज के इस सेशन में। इन्हीं इस संक्षिप्त विवरण के साथ मैं सादर आग्रह करता हूं, बहुत ही विनम्रता के साथ, कि प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद साहब हम सबों से मुखातिब होंगे और हम सबों का मार्गदर्शन करेंगे। ओवर टू यू सर। Thank you, Professor Atul Pandey Sahab. I'm thankful to you for giving me a chance to interact with senior co-colleagues or birds of the same feather. Whenever somebody asks me to introduce myself, I become quite puzzled how to say. I always very often fond of quoting some couplets of some poet. When I was a student of Patna University, I wanted to do journalism course. That time there was no such course in Bihar.
And ultimately, I was told that there is a such course. My cousin told me, who was doing engineering from Aligarh University, that there is a course you can join there. And since then, I have been loitering here and there. जैसे प्रोफेसर अतुल साहब ने बताया कि मैं कभी यहाँ कभी वहाँ, तो मुझे वो शेर याद आ रहा है, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी तेरा दर कभी दर बदर, गमे जिंदगी तेरा शुक्रिया हम कहाँ कहाँ से गुजर गए. Thereby, I mean to say that after doing my journalism course from Doordarshan, I joined, from Aligarh University, I joined Doordarshan. Then I shifted to Film Institute Pune as a faculty member. There I remained for about 3 decades. And from there, I came to IGNOU as a director of EMPC and then director of MCRC Jamia. And now I am here. But since then, there have been 2-3 things in my mind. I was always concerned about the quality of education in Bihar, lack of resources, and so many things, which we can discuss. It will be an endless discussion. But at the moment when Pandey Sahab offered me this opportunity, I thought that why not to share my thought, my ideas, which I have in my mind, and connect with you so that whatever is possible in the given circumstance, we can go about or we can do. When this School of Journalism started last year in 2020, that was the Corona period. And since then, there have been frequent lockdowns and other problems, and due to which whatever could have been done was not possible. And certainly that was the bad time for education, especially the higher education, and also both the teachers and the students. This was the worst time. But when Pandey Sahab was there, I had also gone to meet Professor Nadda because I have been involved with. My sound is clear? Yes, sir. When I went to meet Professor Nadda, because I know him for a long time and I have been associated with CC for a long time, because MCRC Jamia has EMRC, where educational program production is done. EMPC, electronic media production of IGNOU, is well known for e-content, MOOCs and educational program production. And Film Institute is also known for such kind of activities. So I proposed him that why not to do something in Bihar, because I came to know that some initiative have been taken in Magad University, but that is not taking up. And since my tenure is for 3 years, I thought this will limit me because if I don't do anything. So incidentally, Pandey Sahab was there and I happened to meet him. And ultimately what happened, I proposed to Professor Nadda Sahab that to have a workshop on digital education in Bihar. He has agreed for that. And now we are going to have on 7th and 8th March. It has been postponed 3 times due to various reasons. But yesterday I talked to him. We will now have on 7th and 8th March for 2 days in which people of Patna, because MOOCs production activities will be started. And people who are in Patna who can contribute in MOOCs program production in various subjects, who are audio-visually competent, they are able to give good lecture, they have pedagogical abilities, and they understand MOOCs very well and digital education very well. They can write a script and they can also do other things related to digital education. Probably they will be most welcome for such workshop because their involvement will be henceforth will be required for such kind of activities at School of Journalism and Mass Communication. And especially those who are in Patna, they will be preferred because they can be requested anytime and they can come to us anytime and talk to us anytime that they have an idea and they want to make a program on that. Of course, approval of CC will be required because there is a budget involved. There are many facilities involved. So they will have to come out with a proposal as is done in the MOOCs program production. But
to begin with, we are going to have. So before the lecture, I wanted to share with you now. Let us come to the subject, what we have been doing. The subject Pandey Sahab, Atul Sahab talked to me was enhancing digital education. You know, digital, it is not only education, but digital education is gaining momentum and becoming important due to various reasons. The reasons are, one was Corona, which became very obvious to us that in such kind of epidemic, when classes can't be held and there is no other option. The other reason for digital education is there are many people who can't attend classes, like army personnel, like people in service. They don't have time. So digital education can reach them. Also physically handicapped person. Also person who want to update them time to time in their own business. Also people who are in some profession, they don't have time to attend the course, but through digital education, they are in touch, latest touch with their profession. So there are several such reasons. One more reason is that digital education has certain advantage over face-to-face education. Like you can't bring Himalaya into your classroom, but you can bring in photo of Himalaya. You can bring in animals or flora and fauna of sea to the classroom through audio, video, and other digital components. You can have various methods of assessment. You can have various methods of interaction. You can have blended learning through digital education, which is usually not possible in face-to-face classroom. And it provides a kind of convenience that a student can see or teacher can establish fact that digital education is a. So this is now important area of education now. And in that digital education, there is another important component, what is called audio-visual communication. Most of the time, my experience says, even those who are teaching media, they are not very familiar with audio-visual communication. The reason being that we as a teacher, when we are selected, we are never tested for it. The audio-visual communication needs its own parameters, like voice quality, like look, like writing of a script, like selection of a shot when you are putting it in your lecture, making of a graphics. These are all audio-visual communication. Besides that, there are many parts of the communication, which is very much essential, both in general education as well as in digital education. Now let us begin with, I will start, I'm usually fond of starting with the basic human being, because after all, we are imparting knowledge or education to human being. We are not the bird trainer or the animal trainer, the university teacher, I mean. Although there are trainers for that, for them different kind of training is required. But here I am concerned with training of human being, education of human being. So when you think of human being, at least in my mind, always comes the basic instinct of human being. We as a human being, what we are actually. The psychologists say there are few basic instincts in a human being. एक इंसान में कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं जिसके अराउंड पूरी लाइफ उसकी घूमती रहती है. और इमिनेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे ट्रैफलिंगर हैं, जो साइकोलॉजी के बैकग्राउंड से हैं या जिनको जानकारी है उनको पता होगा कि ट्रैफलिंगर ने कहा था कि देयर आर टू बेसिक इंस्टिंक्ट इन ह्यूमन बीइंग, प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोजेनी. मतलब खुद को महफूज रखो और अपनी औलाद को और अपने
प्रोजेनी को महफूज रखो। ये 2 बेसिक इंस्टिंक्ट ह्यूमन बीइंग में हैं साइकोलॉजिकल, जिसके अराउंड उसकी पूरी लाइफ घूमती रहती है। जैसे ही पैदा होता है उसे सेल्फ को प्रिजर्व करने के लिए भूख लगती है, सांस लेता है, अगर नहीं मिला तो चिल्लाता है बच्चा, माँ दौड़ी हुई आती है, फिर वो बड़ा होता है, वो कमाता है, खाता है, सब कुछ करता है, उसको फैमिली होती है, फिर पुरजेनी को पालता है, अपने बच्चों को पालता है, उसके लिए स्ट्रगल करता है, पूरी जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट है एलेक्स एस की, उन्होंने किताब लिखी है थर्ड बेसिक इंस्टिंक्ट। वैसे ट्रैफलिंगर ने जो किताब लिखी है साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू कम्युनिकेशन मैसेजेस, वो किताब बड़ी अच्छी किताब है, बड़ी चर्चित किताब है। अगर आपको मौका, अगर ना पढ़ा हो तो जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि हम सभी लोग एजुकेशन के फील्ड से हैं और अपने को और अपने समाज को और अपने स्टूडेंट को समझने के लिए ये सब बातें हम लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है, भले ही हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हों या फिजिक्स पढ़ा रहे हों। तो एलेक्स की ने कहा कि भाई 3 बेसिक इंस्टिंक्ट होता है, 2 ही नहीं होता है, जैसा कि ट्रैफलिंगर ने कहा। उन्होंने कंट्राडिक्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने जो प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ एंड प्रोजेनी कहा वो तो चलेगा, जिसको की ने कहा, एलेक्स ने, कि इसको हम सर्वाइवल कह सकते हैं, तो वो भी चलिए, वो भी उन्होंने ठीक कहा कि प्रिजर्वेशन का दूसरा माने सर्वाइवल भी होता है, कि चलिए भाई सर्वाइवल हो गया। और प्रोजेनी की जब बात की तो उसको की ने कहा कि भाई इसको हम रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, तो चलिए वो भी बेसिक इंस्टिंक्ट है, ह्यूमन बीइंग में नहीं, एनिमल्स में भी है कि रिप्रोडक्शन, अपने रेस को कंटिन्यू करने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। तीसरा उसने जो ऐड किया, क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग। कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग में सबसे ज्यादा है, हालांकि दूसरे एनिमल्स में भी है, डॉग्स में भी है, चिंपैंजी में भी है, बर्ड्स में भी क्यूरियोसिटी है। अगर कोई बर्ड हमें देखती है तो बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या करने जा रहा है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में कहा जाता है कि अटमोस्ट क्यूरियोसिटी है, जो ह्यूमन बीइंग के प्रोग्रेस का राज बताया जाता है। तो ये जो सर्वाइवल और क्यूरियोसिटी और लर्निंग की बात जब हम करते हैं, तो हम ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, इंसान जब बात करते हैं तो अल्टीमेटली इट कम्स टू सर्वाइवल, क्योंकि ये सारी चीजें सर्वाइवल के आसपास हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। इसीलिए एजुकेशन को जो डिफाइन किया गया है कि इट इज नॉट ओनली लर्निंग ऑफ फैक्ट्स और enhancing knowledge or ability, it is also grooming of mind and personality so that we can face the challenges of life and survive. This is what is the part of education. तो जितने भी एजुकेशनिस्ट ने डिफाइन किया है एजुकेशन को, उसमें उसने सर्वाइवल, फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, ग्रूमिंग ऑफ माइंड एंड ग्रूमिंग ऑफ पर्सनैलिटी, दीज आर पार्ट ऑफ एजुकेशन. So certainly that become part of digital education. इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन जो मशहूर साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट था, उसने कहा था एजुकेशन इज नॉट ओनली लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट ट्रेनिंग ऑफ माइंड्स. तो वो जो मैं बात कर रहा था कि ग्रूमिंग ऑफ माइंड एंड पर्सनैलिटी, इट इज द अदर वर्ड फॉर ट्रेनिंग ऑफ माइंड. तो जैसे ही हम ग्रूमिंग ऑफ माइंड एंड पर्सनैलिटी की बात करते हैं, ट्रेनिंग ऑफ माइंड की बात करते हैं, हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं. अरे अच्छा, ये दिमाग की बात कर रहा है, माइंड की बात कर रहा है, मस्तिष्क की बात कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि मस्तिष्क से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं वो सारी बातें एजुकेशन में आ जाती हैं. मस्तिष्क से क्या जुड़ी हैं? माइंड के पास एक ब्रेन है, एक इंटेलिजेंट ब्रेन है, उसका अपना मैकेनिज्म है. पेडागोजी वर्ड वहीं से, माइंड से इवॉल्व हुआ है. ये जो एजुकेशनिस्ट ने डेवलप किया हुआ है, माइंड की कॉग्निटिव क्वालिटी को देखते हुए जब पेडागोजी को इवॉल्व किया है. फिर माइंड से क्या इन्वॉल्व है? माइंड ने हमारे पूरे बॉडी में जाल फैला रखा है नर्व्स का, न्यूरॉन्स का, नर्व सेल्स का. कोई भी बॉडी का अंग देख लीजिए जहां पे नर्व ना पहुंचाओ, जहां पे नर्व की कमी है वहां से सेंसेशन हमें कम मिलता है. अब ये जो मेडिकल साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कहते हैं, या बायोलॉजिस्ट, हमारे पास 5 सेंसेस हैं, 5 इंपॉर्टेंट सेंसेस हैं जो हमें
एजुकेट करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें इन्वायरमेंट से कनेक्ट करते हैं, हमें बाहर की स्टिमुली से रिस्पॉन्ड करने का मौका मिलता है। और वो जो 5 सेंसेस हैं, उसको अगर हम देखें क्या क्या हैं, तो उसमें आपको लगेगा, एक तो साइट है, देखना, आंख से देखते हैं, एक हियरिंग है जो कान से सुनते हैं, एक टच है, छूना, जो हम उंगली से, स्किन से, मतलब कहीं भी स्किन का कोई हिस्सा टच हो जाए वो टच का सेंस मिलता है। स्मेल है, सूंघना, हमें पता चल जाता है क्या है वो। टेस्ट है, जो